हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर एंड ये क्विक वीडियो है टू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन द ग्लोबल मार्केट्स एंड पोस्ट व्हाट हैपेंड विद यूएस चाइना टैरिफ ये वो सब। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने लायक ये है दोस्तों। आफ्टर यू ट्रम्प सेड दैट दे विल लेवी 100% टैरिफ ऑन चाइना, ही वेंट सॉफ्टर, चेंज हिज स्टैंड। ऐसा क्यों हुआ? Because as soon as he did that, he saw crash in crypto markets. Ethereum, Bitcoin crash हुआ. Ethereum down by 20%, Bitcoin by 15%, and he changed his stand. So crypto market में बहुत important होता है ये देखना कि after the जो movement हो रहा है and Trump is he never wants any market to go down, either US I'm talking about, either crypto or Dow Jones or S&P 500, and that's why he changed his stand. So if you want to predict the mood of Trump, you should predict what's going to happen in the market. If you are right on the market, you will be right what he's going to do next, because he's driven by markets and markets are leading. That's how it moves. तो दोस्तों आज बात करेंगे, वी आर गोइंग टू सी वेरी क्विकली हाउ टू लुक एट इट। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इसके पहले बनाया था, अगर आपने देखा होगा ऑलरेडी, अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी मैं आपसे बात करूंगा एंड आपको वीडियो दिखाऊंगा अबाउट ट्रेडिंग इनटू क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम। एंड क्या लग रहा है पोजिशनली, अगर आप वहां पर देखेंगे कुछ तो चेंज हुआ है, विच इज लीडिंग सिग्नल, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हैज बीन लीडिंग ऑल द वे अप। इफ क्रिप्टो इज रिवर्सिंग देन द यूएस मार्केट माइट रिवर्स एंड थिंग्स कैन चेंज। वी विल लुक एट क्रिप्टो, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, एंड सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये सारे मार्केट्स पे भी अप्लाई आप कर सकते हो। So let me very quickly share across my screen here, and if you are able to see the screen, okay, every one of you, यहाँ पर आप चार्ट देख पाएंगे। यहाँ पर है, ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेर वी सी लॉट ऑफ थिंग्स एंड बिटकॉइन और इथेरियम। तो पहले मैं इथेरियम के ऊपर चलता हूँ, एंड यू वंस यू क्लिक ऑन इथेरियम यू कैन सी द चार्ट्स आल्सो, एंड आई एम गोइंग टू गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो जो मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो ये वाला मूवमेंट था, a very big decline that you can clearly see happened, and that was a huge return। यहां आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट था, this was one big movement, and that was a very big candle that you saw right from 4,400 to 3,400, मतलब इतना फास्ट। So always remember, trading or investing in crypto is always risky. Maintain stop loss, do your own homework, and understand the risk before you take up any kind of a position. That is very crucial. And also, we are SEBI registered research analyst. Whatever I'm explaining is purely learning perspective right now. I'm not advising you to buy or sell anything. There is no guarantee. Remember, यहाँ पे short कुछ भी नहीं होता है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, रिस्क को समझना। यहाँ पर if you are looking at the range, that's the range. Very brilliantly, this is one very powerful indicator which I use is Bollinger Bands. In this indicator, you can see the high was here, the low was here, market spiked down and reverse back also sharply. So movement can be very nasty, very fast. कल भी ऐसा हुआ, आज फिर से। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी वीकनेस शायद आ सकती है, क्योंकि ये मिड बैंड से बार बार रेजिस्ट कर रहा है। तो इथेरियम में रेजिस्टेंस है, वो पता चल रहा है। इफ आई गो एंड चेक बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर हम जाके देखते हैं। ये लेट मी जस्ट रिमूव दिस लाइंस, एंड देयर इज अ कंप्लीट सीरीज व्हिच आई हैव फॉर्म्ड ऑन बिटकॉइन इथेरियम। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, नीचे लिंक भी है वेर यू कैन ज्वाइन माय प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप आल्सो फॉर क्रिप्टो, सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दैट। यहां पर अगर आप देखेंगे, again a huge move on the downside from the top, huge move। मतलब इट कैन बी नेस्टी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टॉप लॉस डाल के रखना है। ओवरनाइट मूवमेंट बहुत फास्ट है, और ये रात को 2-2:30 बजे के आसपास का मूवमेंट था दोस्तों। फ्रॉम हियर नाउ इफ आई गो ऑन 1 hour टाइम फ्रेम चार्ट, एंड इफ आई सी दिस स्पाइक, इट इज मैडनेस। एंड दिस मूवमेंट ऑन बिटकॉइन इज, आप देख सकते हो, 16.5%। कैन यू सी दैट? 20,000 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 20,000 यूएस डॉलर का मूवमेंट है। If you are on the right side of the trend, you know how much it would have won. If you're on the wrong side of the trend, again,
you would have lost a lot. So overall, if I'm looking at this market and if I'm looking at daily, and साथ में मैं एक इंडिकेटर लगाऊं जिसे मैं कहता हूं KST. KST is a very very powerful indicator. This indicator can't, I don't apply it on daily. You have to apply it on hourly or maybe lower time frame. And this helps us to understand a strong momentum. It's a time based indicator. अगर ये अप्लाई करते हैं तो मुझे लग रहा है यहां से प्रेशर बन सकता है. एंड दिस इंडिकेटर ऑलरेडी हम तक देख सकते हैं. दिस मूव्स बिटवीन, इट्स अनबाउंडेड इंडिकेटर. और ये था मेरा जीरो लेवल. ठीक है, जीरो लेवल है. और वहां से अगर ये टर्न हो रहा है, इट इंडिकेट्स द मोमेंटम इज रेज्यूमिंग ऑन द डाउन साइड. साथ ही में अगर मैं बिटकॉइन पे देखूं यहां पर, ओवरऑल आई कैन सी, सो दिस इज अ 1 hour टाइम फ्रेम चार्ट. Overall prices sharply moved down, okay, and sharply नीचे आया and retraced to some extent and again reversing on the downside. So if I apply a Fibonacci 2, so ये left side में there is something known as Fibo retracement. If I apply that Fib based retracement, we can see that from this point till this point that was the move. एंड देखिए क्या रिस्पेक्ट किया, 61.8%. अमेजिंग. यहां पर 61.8 पे गया, रिवर्स 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 कितने बार. 61.8% से इस क्रिप्टो ने रिवर्स किया नीचे की ओर. एंड इट्स नाउ ब्रेकिंग द लोअर एंड ऑफ द बेंड. सो स्ट्रेटेजी है, इफ दिस क्रिप्टो ब्रेक्स बिलो 1,11,590 इसके नीचे, तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन सकता है. एंड वी कैन अगेन गो एंड रीटेस्ट टुवर्ड्स 1,09,700 लेवल्स. शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी है. स्टॉप लॉस ये कैंडल का है. सो यहां इनिशिएट करने, सो रिस्क रिवॉर्ड निकालना बहुत जरूरी है. ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड हैव अ वेरी क्लियरली डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड. दिस इज वेयर द स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी अबाउट द मिड बैंड, अबाउट द कैंडल हाई. ये लेवल पे which is also 50%. Target is near this level of where it is written as 0, and you can see the power of 61.8%. View change कब होगा? If we start seeing acceptance above the upper bands and price goes above the 61.8 and KST momentum बताएगा, तो we will change our stand. Unless and until that, I think short term में pressure है this crypto. So for the first time you might be listening me where I'm talking about selling and making money from crypto. But remember, there has to be a stop loss and a risk. Understand the risk, not on the buy side, but on the sell side is where I think it's going to work. Because bands expand हुआ, sharp crash हुआ, and that's where we are. So it looks like यहाँ पर up move फिलहाल danger में. And we can always see a huge negative divergence that we can see from here, where prices made a high above prior high. Can you see that? Huge negative divergence. And KST made a lower high. So KST is a very powerful indicator which you need to combine properly. You need to know how to use this indicator in a correct way, and it works. So that's how I'm looking at it. और यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट है, यू कैन गो टू ऑप्शंस. एंड अगर आपको ट्रेड करना है, देयर इज एक्सपायरी एवरी अदर डे. 16 अक्टूबर का आप स्ट्राइक ले सकते हो. एंड यू कैन सेल कॉल ऑप्शन. डायरेक्टली आप जा सकते हो ऊपर में, एंड यू कैन सिलेक्ट अ कॉल ऑप्शन. एंड द आईवीज आर प्रीटी एलिवेटेड. यू कैन सी दैट. सो 5460 का आईवीज है. So you can always sell call options from here. Directly you can select and you can put the order. So I'm just going to wait and see how it behaves. If it's breaking the level, there are other cryptos also you can explore, Solana, USD and everything. Every crypto crashed on that day. Well, something major has changed. It's for the first time I have seen such systematic collapse across crypto market. That was such magnitude. मतलब collapse हुआ है, इतने बड़े मैग्नीट्यूड का कोलैप्स बहुत टाइम के बाद हुआ है. मतलब समथिंग हैज चेंज्ड. दैट्स हाउ यू कैन look at it and you can simply trade the market. So ये था शॉर्ट वीडियो, हाउ टू कंबाइन KST बॉलिंगर बैंड्स डेली एंड आवरली चार्ट पे, एंड ट्रेड सेटअप आप बना सकते हो. अगर आप ट्रेड करते हो, इसमें नहीं करते हो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो.
Do share across your learnings and comments down there if these kind of videos are helping you teach, which is more of learning and educational. If it's helping you to learn about better way of trading the markets, आपके कमेंट नीचे डालते रहिए. चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे जल्द. हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर.